Good afternoon, student. Today I am going to tell about zenithal equal area projection. Now, what do you mean by this projection? This projection was designed by J. H. Lambert in 1772. Please correct it. That is 1772. In this type of projection, the pillars have been drawn with different radius so that they enclose on the map, the same as they do on the globe. It is also known as Lambert's equal area projection. It is frequently used to represent polar areas. Even a hemisphere can be represented correctly. The shape is little bit distorted away from the center. इस प्रोजेक्शन को हम ध्रुवी खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। यह एक असंदर्श प्रक्षेप है जिसकी रचना सर्वप्रथम जे. एच. लैम्बर्ट ने मानचित्रकार ने सन 1772 में किया था। अतः इसे लैम्बर्ट का ध्रुवीय समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। Let us start our question. The exercise number 8 and it is divided into two parts. Means in this question number 8 it carries two questions. Now question number 8 part A. Prepare a graticule on zenithal equal area projection polar case mathematically for the northern hemisphere on the scale of 1:250,000,000 at an interval of 10 degree. हिंदी में नोट कर लीजिए इसको। प्रदर्शक भिन्न 1:250,000,000 तथा प्रक्षेपांतर 10 डिग्री पर गणितीय विधि से। इससे पहले आपने जो भी विधि किया था वो आपका ग्राफिकल मेथड था, यानी कि आपने रेखीय विधि द्वारा आरेखीय विधि द्वारा बनाया था, लेकिन ये आपका गणितीय विधि है। तो गणितीय विधि से उत्तरी गोलार्ध या ध्रुवीय क्षेत्र के लिए एक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। एक बार फिर से नोट कर लीजिए क्वेश्चन। प्रदर्शक भी 1:250,000,000 तथा प्रक्षेपांतर 10 डिग्री पर गणितीय विधि से उत्तरी गोलार्ध ब्रैकेट में ध्रुवीय क्षेत्र के लिए एक ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। Now it is a mathematical method. So first you note the formula, and the formula for this projection is 2r sine bracket cos minus latitude bracket close divided by 2. This is a formula. Now step first, or we start our calculation, our projection. Now first you calculate radius of earth. Now when you calculate the answer, that is 1 inch. Now next step, radius, because interval is 10 degree, so we start our question. Radius for 80 degree parallel. Please note down that was a 80 degree radius for 80 degree parallel, and the formula is same, 2r sine bracket cos minus latitude bracket close divided by 2. Now 2, the value of r means radius, and multiply 1 because your answer is 1. Sine 90, the cos value is 90 because you draw the polar case. 90 minus 80 because the latitude is 80 bracket close divided by 2. Next 2 sine 10 because the answer 90 minus 80, that is 10 divided by 2. Next 2 sine, that is a 5 degree. Please correct,
that is a 5 degree. Means you find out the value of 5 degree sine value, and the value of the sine value you see in your log book. So log book, and if you want to check your this value, you also check in your mobile. So 5 degree sine value, and the values for the 5 degree sine, that is 2 multiply 0.087. that was a value of 5 degree sine, and the answer after multiplication, the answer is 0.17 inch. Now radius for 70 degree parallel, formula same, 2r sine cos minus latitude divided by 2. Now next 2 multiply by 1, because the radius of radius is 1, sine 19, that is same value, but here that is a calculation for the radius of for 70 degree parallel. So you put out the value 70 degree. Now bracket close and divided by 2. Next 2 sine 20, because when you minus 90 minus 70, that the answer is 20. Now 20 divided by 2, and the answer is 10. So 10 means 2 sine 10 degree. This please note, write down the symbol also. I forget it, or it is mismanaged, because here the sine symbol is pushed down here. So 10 degree, then you find out the value of sine 10 degree. Now the value of sine 10 degree is 0.173, and when you multiply by 2, the answer is 0.34 degree, sorry, 0.34 inch. Now next radius for 60 degree parallel, same formula. Here 2 multiply 1 sine 90, that is value is also same, but here 60, because the radius for 60 degree parallel, 60 divided by 2. Now next 2 sine 30 divided by 2, and the answer is after divide 15. So 2 sine 15 degree, and the sine 15 degree value is 0.258, and when you multiply, the answer is 0.51 inch. Now next radius for 50 degree parallel, formula is same. Here you minus 90 minus 50, that is a 40, and when you divide by 2, the answer is a 20 degree. So you find out the value of sine 20 degree, and the value is 0.342. When you multiply by 2, that is 0.68 inch. Now next radius for 40 degree parallel, same formula. When you minus by 90 minus 40, that answer you got 50, and when you divide it by 2, the answer is 25 degree. 2 sine 25 degree. Then you find out the value of sine, that is 0.422, sorry, and when you multiply, the answer is 0.84 inch. Now for same you repeat for 30 degree parallel, but you remember that you mentioned the degree symbol, that's for here radius for 30 degree parallel, and when you put out the value like 2 sine 30 degree, you also mention 30 degree, and when you find out the value of sine 30 degree, the answer is 0.5, and then you multiply by 2, and answer you find out 1 inch. Now same for repeat for 20 degree parallel, and also for 20 degree parallel you also
put the 20 degree all here there, and after calculation by the formula you got 2 sine 35 degree. 2 sine 35 degree. Now the value of sine 35 degree is 0.573 and the answer 1.14 inch. Now radius for the 10 degree parallel, 2r sine cos latitude divided by 2, and after you got the value of 2 sine 40 degree. 2 sine 40 degree. Now the value of 40 degree sine 0.642 means the answer is 1.28 inch. Now lastly, a radius for 0 degree parallel, and the formula, the same formula, but you got after calculation 2 sine 45 degree means you find out the value of 2 sine 45 degree. So you multiply the value 0.707 and you multiply by the 2, the formula is 1.41 inch. Now after you calculate, that is a mathematical method, so after you calculate you got the values, means first you got the 80 value radius, 70 degree, 60 degree, for 50 degree, for 40 degree, 30 degree, 20 degree, 10 degree and 0 degree. So finally you got the answer. Then you go to step number 3, and that is your final projection. Means first you draw the line, one vertical line and one horizontal line, and that the meeting point is N. Now take the distance in your compass. First you take the distance of 0.17 means that is a 0.2 inch. Then you draw the first concentric circle. Now again you go to back your calculation and you take the value of 70 degree and the value is 0.3 inch. So you take the in your compass 0.3 inch. Then again you draw one circle for the 70 degree parallel. Same for 60 degree, you put the value 0.5 inch. For 50 degree you take 0.6 inch. For 40 degree you take 0.8 inch. For 30 degree you take 1 inch. Now for 20 degree you take 1.1 inch. For 10 degree you take 1.3 inch, and for 0 degree you take 1.4 inch distance in your compass and draw the concentric rings you show in this picture. Then finally when you draw the all degree, then you draw your meridians line which is start from N, and the interval you show in your question, that is 10 degree. So you start putting the value 10 degree, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 and 180, and write down all the values. And then you at the 0 degree you write down the equator line, equator only, and in the top of your projection you write down zenithal equal area projection, polar case, and RF is 1:250,000,000. और हिंदी में अगर हम इसको देखते हैं तो ये उसी तरह है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ आप जो फार्मूला मैंने दिया है उसी फार्मूले पर आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। एक वैल्यू समझ लीजिए कि रेडियस फॉर 80 डिग्री पैरेलल, क्योंकि 10 डिग्री का जो है वो आपका अंतराल दिया गया है,
इसलिए 80 डिग्री के पैरेलल पर हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो फॉर्मूला जो है वो 2r साइन कॉस माइनस लैटिट्यूड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2, और इसमें हम ये फॉर्मूला है हमने 90 ये आपका रिटन है, ये आपको लर्न करना है, 80 आपको यहाँ पे माइनस करना है। इसके बाद जो 2 है ये फॉर्मूला में r मीन्स ये जो r रेडियस जो आपने निकाला है मीन्स ये 1 इंच है। इसके बाद जब आप इसको 90 माइनस 80 करेंगे जो आपको 10 मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और जब आपको जो 5 मिलेगा वो साइन की वैल्यू आपको निकालना है। साइन की वैल्यू आपको लॉग टेबल में दिया हुआ है। कॉलेज जब ओपन होगा तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, बता दूँगी कैसे आपको लॉग टेबल में देखना है वैल्यू। तो साइन 5 डिग्री की वैल्यू जब आप देख लेंगे तो वो वैल्यू होगी 0.087, और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.17 इंच में। उसी तरह आप 70 डिग्री के लिए कर लीजिएगा, 60 डिग्री के लिए, 50 डिग्री के लिए, 40 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 20 डिग्री के लिए, 10 डिग्री के लिए और 0 डिग्री के लिए। सेम वही चीज़ सारा आप रिपीट कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 20 डिग्री है, रेडियस फॉर 10 डिग्री, रेडियस फॉर 0 डिग्री, तो ये सारा जो है वो डिग्री में होगा। और यहाँ पे जो 2 साइन 35 है ये 2 साइन 35 डिग्री, 2 साइन 40 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री। इसके बाद जब सारा वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो आप जो है वो इस स्टेप नंबर 3 को ड्रॉ करेंगे। 2 लाइन आप ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर जो होगा वो n होगा। जो भी वैल्यूज़ आपने जिस डिग्री के लिए निकाला है मीन्स जो आपने जैसे 80 के लिए डिग्री के लिए निकाला है वैल्यू, उस 80 डिग्री को आप उसका जो वैल्यू आपका आया है उसको अपने कंपास में लेकर उसका एक सर्कल बना लीजिए। उसी तरह 70 डिग्री का, उसी तरह 60 डिग्री का, 50 डिग्री का, 40 डिग्री का, सबका जो है वो एक सर्कल बना लीजिएगा। जब पूरे सर्कल्स आपके बन जाएंगे, ये आपकी जो है वो पैरेलल लाइन है यानी अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं को बनाने के लिए आप पॉइंट से, चूँकि आपका जो है वो अंतराल 10 डिग्री का है इसलिए 10-10 के डिग्री के अंतराल पे आप इसी तरह पूरा जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा। फाइनली आप अपनी हेडिंग को उसके ऊपर मतलब टॉप पे जो है वो लिख लीजिएगा। अगर ये एक पेज में नहीं आता है देन यू गो फॉर 2 pages and finally you complete your projection. Thank you.